field has emerged. We talk about Industrial Revolution, 1958, 1858, 57, and we have seen that prior to that there was nothing like industry, no factory system, but it was all family-based business, and everything was in the family. But then suddenly there was a great demands of Indian cottons in the global market, and there was a need for the factory system. And in the 1864, the factory system also emerged, and gradually the production from home to factory reached, and that has given birth to the management. But in those days, in Gujarati we called Mehtaji's management. So one person was making the management. So he was recruiting, he was promoting, he was making salaries, attendance, everything was done by one person only. एक ही आदमी ये सब काम करता था, and उसको मेहताजी बोलते थे कि मेहताजी ये सब देख ले, and that was the Mehtaji's management. Then gradually in the 1881-82 we know that Factory Act has come, because there was a lot of exploitation of the people. वर्कर्स को कोई ब्रेक नहीं मिलती थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था, और एक डिमांड थी कि एटलीस्ट वीकली ऑफ होना चाहिए और हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए. ये सब डिमांड होते हुए ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881-82 में आया, एंड दैट ऑल्सो यू हैव स्टडीड. तो फैक्ट्री एक्ट आया. फैक्ट्री एक्ट में कुछ प्रावधान है कि वेलफेयर होना बहुत जरूरी है, एंड सेक्शन 42 to 50 of the Factory Act talks about the welfare facilities, and we know that various welfare facilities have been provided to the workers as per Factory Act. So Mehtaji's management to welfare. Then workers played very important role in the freedom fighting movements also. Not only that, but 1919 Simon Commission has also made visit to India, and they recommended that workers have a right to unite. Workers को अपना ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, और वो यूनाइट हो सकते हैं और अपना यूनियन भी बना सकते हैं. As part of it, first time India witnessed the trade union called AITUC, All India Trade Union Congress. वो सबसे पहला यूनियन आया. Of course, its ideology is with Communist Party of India, and more in the Kerala, West Bengal, and some of the parts of the country, their existence is there, and their philosophy is also totally different, because they believe that whatever profit earned by the management is all because of the workers. Workers are doing a lot of hard work, and their hard work should be recognized somewhere. But that was the first trade union that has come into the existence. So again, industrial relations. So IR has also begun. Secondly, the division of labor, somebody has started, somebody has talked, and Frederick Taylor has also introduced some new theorem, and that theorem was to have a division of labor, that we must have division of labor for all the activities if we really want to manage the laborers. So management, then welfare, and industrial relation. Then till 1948 we witnessed more and more industrial relations. After independence, lot of importance have been given to the labor movements, and we have seen
We have heard a lot about the what we can say, the attack on HR, attack on personal managers by the trade unionists, and they have been made victims of many things. Why? Because the acts, legislations were such. So again, the personal management also began, then industrial relation. Then in the year 1984, there was assassination of the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. उनकी हत्या हुई 84 में. And India had a very young Prime Minister, Rajiv Gandhi. The moment he became a Prime Minister of India, immediately he renamed the Ministry of Education to Ministry of Human Resource Development, HRD. So HRD ministry was started in this country. And that HRD has taken place in the industries also. And first time, the T.V. Rao, who is considered to be father of HRD in India, who is supposed to be a professor of Indian Institute of Management, Ahmedabad, and now placed at Hyderabad, he started human resource development as one of the important discipline in the labor field. And since then we talk about human resource development, that HRD has to be there. So management, one person's management, then 1919 industrial relations, division of labor, the management of the people, labor welfare, and human resource development. And in the 1990, let me tell you that the Management Institute London first time came with the definition of human resource management, that everyone requires human resource management, because simply giving training is not going to serve the purpose. Training is for the development, but what about the management? लोगों का मैनेज करना बहुत जरूरी है. So after 1990s, we started talking about human resource management, and since then India has one of the very important field named human resource management. Now every industry talks about the human resource management. They have personal management department, but then this personal management departments have been replaced by the HR department, and they have renamed personal management to human resource management. In many departments, the same name, personal management, but they are practicing human resource management. So many times question comes to us that it is the personal management, how come they are practicing the human resource management? But कर रहे हैं और ये चल रहा है. But then sometimes question comes to us that what is human resource management? Human resource management हम किसको बोलेंगे? या तो in a very simple way, अगर लेमैन को समझाना है, कोई सामान्य आदमी को हमें समझाना है कि HR क्या है, तो HRM or HR is nothing but helping an individual to understand his potential. Helping an individual to understand his potential. क्योंकि आदमी में बहुत कुछ शक्ति है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल हम बाहर नहीं ले पाते हैं, या तो वो पोटेंशियल कोई गलत तरीके से बाहर आती है, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो HR का काम ये है कि हर आदमी को हम रियलाइज कराएं कि यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, एंड व्हाई डोंट यू utilize this potential for the development of you as well as your organization. आपका खुद का डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए आप आपका पोटेंशियल का यूज क्यों नहीं करते? तो ये काम करना इट्स ए जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में ही इज ए की पोजीशन, ही इज ऑन द की पोजीशन, और वही की पोजीशन से वो ट्राई करता है कि हमारे हर एम्प्लॉइज में एक चीज़ डालनी जरूरी है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, और
आपको ये समझना जरूरी है कि आप में बहुत कुछ पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड यू हेल्प अस टू ब्रिंग आउट दिस पोटेंशियल आउट। ये करना बहुत जरूरी है। तो एचआर का रोल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ फील्ड which is omnipresent, which is omnipresent means it is everywhere. HR का रोल हर जगह पर है, क्योंकि कोई पानी की असुविधा हुई, या तो लोग नहीं आ रहे हैं, या लोग आए हैं और तूफान कर रहे हैं, या तो लोग काम नहीं करने के लिए तैयार है, या तो इनडिसिप्लिन है, तो हर तरीके में अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? HR डिपार्टमेंट। तो कभी कभी मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि HR इज लाइक ए आचार, है ना, कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसके सबसे पहले क्या आ जाता है? आचार आ जाता है, क्योंकि उसके बिना चलता नहीं है, तो पहले आचार आता है। सिमिलरली द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो, HR इज लाइक ए आचार, क्योंकि उसके बिना चलता ही नहीं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क। इंजीनियर्स बाद में आएंगे तो चलेंगे, बट HR हैज टू बी देयर। कि कितने इंजीनियर चाहिए, उसको क्या काम दिया जाएगा, किस तरीके का हम काम देंगे, वो सब काम वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला करेगा। देयरफॉर इट इज ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर। सेकेंडली इट इज परवेसिव, मीन्स एट ऑल लेवल, हर जगह पर आपको HR होना जरूरी है, क्योंकि you cannot say कि I have recruited somebody so my HR job is over. No, it is continuous process, continuous काम चलेगा, क्योंकि सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से नहीं होगा। आपको ये भी देखना है कि जो हमने एसेट को रिक्रूट किया है वो एसेट लायबिलिटी ना हो जाए, है ना। हम लोग अच्छे अच्छे लोग ले आते हैं कि चलो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्टूडेंट लेकर आते हैं और आपने ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट किया, और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएगी। तो ऑल एसेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हर फैसिलिटी उसको देनी पड़ेगी, या तो जो कमिट किया है वो देना पड़ेगा। सेकेंडली कि उनका करियर अपॉर्चुनिटी भी देखना पड़ेगा। ए पर्सन हैज़ वर्क 3 years 4 years कंटिन्यूसली, if his performance is extraordinary, उसको प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, उसका करियर ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड, व्हाट अबाउट हिज फैमिली? तो वी वर्क एट द फैमिली लेवल ऑल्सो, कि उसकी फैमिली का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अदरवाइज दे विल नॉट स्टे विथ यू, छोड़ के चले जाएंगे तो सर मेरे बच्चों का एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो आई कैन नॉट लिव विथ यू। देयरफॉर इवन HR प्ले रोल in getting admissions of the employees children also. See, हमको ये भी काम करना पड़ता है, अदरवाइज अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग करियर ऑफ देयर चिल्ड्रंस ऑल्सो, गुड एजुकेशन। देयरफॉर our role is extended like anything. Everywhere you have to perform your role. So it is omnipresent, pervasive, very important. Moreover, it is a continuous function. HR is a continuous function. As I told you कि आप नहीं बोल सकते कि now my job is over. HR का जॉब कभी ओवर होता ही नहीं। On the contrary, it is continuous function. ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो HR का रोल है वो कंटिन्यूस होता है, और आपको इवन वो आपकी कंपनी छोड़कर जाता है तभी भी वी टेक हिज एग्जिट इंटरव्यू, वी आस्क हिम कि क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ, वो ऑल द रिस्पॉन्सिबल, एंड वी सी टू इट दैट वी ट्राई टू इम्प्रूव द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. So HR has a wide role to play in the organization, and if I talk about the functions, it keeps on increasing day by day, and the challenges are also increased like anything. और ये सब करने के लिए जो HR में जॉब के लिए जाने वाले हैं
उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा, इनको भी ये समझना पड़ेगा कि HR कोई सिंपली रिक्रूटमेंट नहीं है। HR कोई सिंपली जाके पनिशमेंट हम दे देंगे। हमारे वी हैव नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, वी हैव नॉलेज ऑफ सो एंड सो एक्ट, विल टेक एक्शन। वो जमाना गया, बिकॉज HR सेज नो लॉ एंड ऑर्डर, इट्स ऑल लव एंड ऑर्डर। If you go with law and order, nothing is going to happen. वो भी सामने से लॉ बताएगा। See, because your workers are very smart, they are also intelligent workers. So simply law and order will not work, but you have to have love and order in the organization. Let us make the situation accordingly and try to understand कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर ये करेंगे, then and then you will be able to make difference in the organization. Secondly, that now you can say, you cannot say that this is the policy, we cannot change. No, it has to be individual oriented. See, पहले क्या था? See, कि all those who complete 10 years उनको प्रमोट करो, इसका 10 साल नहीं हुआ है उसको प्रमोट नहीं करेंगे। HR said no, don't count only years, you count the performance, you count the performance. So you have to have two channels of promotion. One is the regular promotion. All those who are waiting for seniority, you promote them accordingly. And on the other side, all those who are intelligent, all those who are functioning, all those who are giving results, we need to promote them accordingly. Otherwise, they will leave the organization, and your asset will go out. So we cannot think of losing such people. So there HR has to play the role, and we must see कि हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मे बी आई हैव सीन इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन साल में 2-2 दफे भी प्रमोशन होते हैं। They get promotion very fast. Even the salaries are also increasing very fast. And because the youngster, the students like you, the HR professionals like you are interested in career making. See, and during our time, long service award was 25 years. Now long service award is only 2.5 साल. It is, they cannot work more than 2 years or 3 years. And they say this is my condition. See, why I am telling this? Because it's going to be a challenge to you. That they will say, this is my condition, sir. And if you wish, you can fulfill my condition, then I will join your organization. पहले, other side से condition आती थी. कभी condition employer side से आती थी. पहले employer conditions लगते थे. ये हमारी ये condition है और आपको काम करना पड़ेगा. Now condition comes from employee. Yes, this is my condition. First you explain us what will be my position 2 years from now. 2 साल के बाद मैं क्या बनूंगा वो मुझे बताइए. Then I will join your organization. Sir, what will be my salary? What will be my increment? And what will be my the facility? You tell me. और ये क्लियर करो, उसके बाद I will join the organization. पहले ये नहीं था. पहले अदर साइड से कंडीशन दी जाती है. Now it's all things are changing very fast, and you will have to manage. You will have to see. Therefore, HR is very, very important. And as I told you, that I have seen the organization. मैं अभी पढ़ रहा था कि बॉम्बे में one organization, तो their employees, they call to the HR department that today I have 2 to 3 works. And I will come little late. मेरे पास 2-3 काम है, मैं हाफ डे लेना चाहता हूँ और मैं लेट आऊँगा. तो immediately he received phone call from HR department that you need not to take the leave. If you wish, we can provide you vehicle. If you wish, we can provide you some assistance. Please do your job and come to the factory, come to the organization. This is how they are caring for their employees. And when you join the HR department, you need to think about this also.
that how can I take care of my employees? Because they are employee, but prior to employee they are what? They are human being like you. So you are human being, they are human being, and treat them as human being only. You may be thinking there is a peon, there is a sweeper. Yes, they are peon, servant, the watchman, or say your, the sweeper. But prior to sweeper, what are they? They are human being like you. So why don't you teach them as a human being? We need to treat them as human being. Very important thing that you need to understand as HR professional. Otherwise, instead of solving problem, you will be creating problem. See, and there will be chaotic situations in the organization. So very, very important thing that we need to understand. Another the good example I will quote. We have an organization called ABB Hitachi in Baroda, and they are in the motor submersible pump and also in the power industries. So they had lot of problems at the time of say 10th and 12th examination. So in the month of March and April, lot of parents they take leave. See, father, not parents, but father take 1 month leave. Why? Because my daughter is appearing in 10th examination, my son is appearing in 12th examination. So I need to take 1 month leave or say 15 days leave. What for? To take care of my child. So that I can take care. So क्या पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ते हैं कि नहीं. So I need leave. So every time management had a problem, because every year, if large number of employees they take the leave, plus it is their right, you cannot say no. If there is a balance in their account, so they take leave. On the other side, the production people they say how to get production from these people. So the HR department they work out a strategy, and the strategy was to invite teachers from education department, psychology department, and social work department, and they called meeting of all the children who are going to appear in 10th and 12th examination, and they professionally orient them how to appear in examination. So not only that, but they see to it that it reaches to them all information, it reaches to them, and they participate very actively. So some of the children they started telling to their fathers that it is good if you don't take the leave, because my HR department is taking care of us. So you need not to take leave. Not only that, but on the day of examination, the very good certificate, the good wishes certificate by the Vice President of HR, that wish you all the best and appeared in your examination nicely. So you won't believe कुछ workers के तो drawing room में रखे गए ये certificate, क्योंकि Vice President का तो नाम ही सुना होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, उसकी साइन से सर्टिफिकेट आता है, तो कितना अच्छा लगता है. तो दैट इज हाउ द रोल ऑफ HR. कि HR का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है. यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और दी वहाँ की जो एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम थी, दैट इज गॉन डाउन. एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम हैज गॉन डाउन. व्हाई? बिकॉज द चिल्ड्रन सेज दैट नाउ ABB Hitachi is taking care of us. Papa, you need not to take the leave. क्योंकि आप हमको प्रॉब्लम करने के सिवा और कुछ करते ही नहीं. तो आप ना हो तो अच्छा है, और HR डिपार्टमेंट वेलकम. तो ये है. दूसरा एक मैं अच्छा एग्जांपल कोट करूँगा. वी हैव वन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम भूल गया, बट देन दे एवरी वेडनेसडे द HR डिपार्टमेंट they send vehicle to their workers locality, and they bring their children and wives to the factory. The husbands are already working, so they bring them and they take round. Whole days they sit in the factory, they eat in the canteen, and in the evening they send them to their home in the same vehicle. And this is regular phenomenon.
so this time so and so department 30, 50, the wives and the children will come, then another department, fourth department, fifth department, all of them. And they said that because of this, many workers, they said that when we go to the home, our children hardly create problem to us. Even the wives are also not creating any problem. क्योंकि वहाँ देखते हैं, क्योंकि वो लोग बताते हैं HR वाले कि this is the machine जहाँ पे आपके husband काम करते हैं और आप देखिए कि how difficult it is to work. Is it? और ये तो बोलते भी नहीं, उनको बताते भी नहीं है, बोले आप सुनते ही नहीं है तो कहाँ से बताएंगे. And not only that, but children also realize कि हमारे पापा ये मशीन पर काम करते हैं. तो अभी जब भी घर पर आएंगे तो हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे. At least we will not create problem. And many workers say because of this, the problems at family level has gone down. अभी उसको अच्छी तरह से सोने भी देते हैं, टाइम से खाना भी मिल जाता है. Not only that, but unnecessary जो इधर उधर करना पड़ता था वो भी डाउन हो गया. Just because of good initiative of human resource department. तो HR डिपार्टमेंट जो है इस तरीके से बहुत कुछ रोल कर सकता है. एंड यू कैन थिंक दैट व्हाट कैन आई डू फॉर माय वर्कर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर माय एम्प्लॉयज, व्हाट कैन आई डू फॉर माय डिपार्टमेंट पीपल. आप खुद सोचो और नई नई टेक्निक्स कर सकते हो, नए नए फंक्शंस डेवलप कर सकते हो, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. बट दिस इज हाउ the role of HR keep on changing. Now let me talk to you about the challenges. कि हमारे लिए क्या क्या चैलेंज है. तो सबसे पहली चैलेंज ये है कि now we will have virtual organization जिसका कुछ नहीं है. एमवे कहाँ है? एमवे आपने सुना कभी? कोई ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम, गॉड नोज. दवाई आती है, अच्छी आती है, एंड पीपल सेड वेरी गुड प्रोडक्ट्स, लेकिन करोड़ों का बिजनेस चलता है. तो सच टाइप ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग प्लेस, और उसमें काम करना है तो कैसे काम करना, दैट्स अ बिग चैलेंज. एंड देयर वी नीड टू एक्स्ट्रा रोल एंड वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट moonlighting. Moonlighting is a new concept. Moonlighting में क्या होता है कि एक आदमी 5 जगह पर काम करता है. एक आदमी he is working at 5 places. तो संडे कहीं पे जाके काम कर लेगा, फिर 5 o'clock वो डिपार्टमेंट से निकल गया, फिर जाके कहीं पे 1 घंटा काम करके आएगा, और वीकली और कहीं पे जाएगा. तो मून लाइटिंग में 1 person is working at 3-4 places. So sometime your policy may be late. तो पॉलिसी शेयर नहीं होनी चाहिए, वो हो जाती है. कभी कभी जो कंसंट्रेशन होता है वो भी नहीं होता है. एंड समटाइम वो आदमी को पता नहीं कि ये काम कौन से डिपार्टमेंट का है. समटाइम ये मिक्सअप ऑल्सो. दैट इज इन द मून लाइटिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए. But then, now it is permitted. The person is capable, he can do that. है ना? वो वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है कि you can take one subject from here, another subject you can take from somewhere else, third subject you can take from some other department. तो coordination will be a problem. But then ये moonlighting में बहुत बड़ा problem है. Third is gig economy. You might have heard about this concept, gig economy. Contract and contract. So सबसे ज़्यादा the contractual employee हो गए, and that has entered into the academic fields also. Very difficult. तो ऐसे में वर्कर्स के साथ काम करना, एम्प्लॉइज को डेवलप करना, that becomes a severe problem to us, because every day you get new person, and how to get work done from them, how to work with them, and what will be their commitment, because they are not sure about their future. उनकी फ्यूचर क्या है वो खुद को मालूम नहीं, वो क्या करेगा. So gig economy is the biggest problem, because कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर फील्ड में आने लगा है.
And similarly, in the HR department also, nowadays, it's a severe problem. So that is also one of the biggest challenge. The another challenge is, आप agree होंगे कि नहीं, but commitment of HR people is doubtful. See, पहले हमारे लिए commitment क्या था? Organization is important, salary is not important. ठीक है जो दिया वो, but my commitment is my organization. Nowadays it is very difficult. They always see their career. They always see their career. They always see their development. They always see. वो हमेशा देखते कि मेरा क्या डेवलपमेंट. तो कमिटमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम. तो मैं तो सर हमारे वहाँ तो एवरी टाइम आई हैव टू आस्क यू आर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. नहीं सर, उसके बाद तो मैंने रोल चेंज कर दी. तो बड़ी प्रॉब्लम है. सी HR people they often change the job, and sometime for nominal rise also they have changed the field. छोटा कुछ राइज मिल गया तो भी चेंज कर देते हैं. कमिटमेंट इज अ डाउटफुल बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस, इट कीप ऑन चेंजिंग. गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा कुछ न कुछ तरीके से बदलती रहती है, और उसके साथ काम करना इज ऑल्सो ए बिग चैलेंज टू अस, क्योंकि ऑफन वो चेंज होता रहता है. एंड इन दैट सिचुएशन कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को साथ रखेंगे, और दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आई डोंट कंसिडर इट एज ए प्रॉब्लम, but gender issue in the organizations, because the girls population is increasing like anything. MS University, 65% teachers in the MS University. So day by day the girls का जो education level है वो that is increasing like anything. कल IAS का रिजल्ट आया, जो 4 टॉपर्स है इंडिया में, all 4 of them are the girls only, है ना. So, girls' education has increased like that. One of the public sector, the general manager, he was sharing with me that, sir, we promote, I am not against the girls' education, I do promote girls' education. लेकिन मेरे वहाँ सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे सेकंड शिफ्ट में गर्ल्स को बुलानी पड़ती है, थर्ड शिफ्ट में भी बुलानी पड़ती है. अभी फैक्ट्री एक्ट तो ये करता नहीं है, और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 इंजीनियर 3 इंजीनियर है. इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुड बी गर्ल, बट नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर गर्ल एंड वी हैव टू टेक वर्क फ्रॉम देम. एंड ही सेड, हाउ कैन आई से कि भाई तुम फर्स्ट शिफ्ट में ही आओ. इफ आई डू सो माय द अदर एम्प्लॉय विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है. और ही सेड वी हैव टेकन स्पेशल परमिशन कि एटलीस्ट हम सेकंड शिफ्ट में उनको बुलाएंगे. और यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, ही सेड सर, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क को एक असाइनमेंट दिया गया कि यू प्रिपेयर ए मॉड्यूल एंड आप 30-40 वर्कर्स, हमारे इंजीनियर्स की बैच बनाओ और उनको ट्रेनिंग दो. वी नीड टू सेंसिटाइज for the women's rights. Similarly, POS Act also, because for no reason many workers have been suspended. Even good managers have been suspended, sir. क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं है, बट ऐसे कुछ बोल दिया, ऐसे कुछ कर दिया, एंड सीधा घर चले गए. एंड वी नो दैट द POS Act you have to implement very strictly. Nothing can be done. And everywhere you have to have committee also. So we developed a module. We started training to the managers. We started training for the workers also, even the girls themselves, and we started sensitizing them, because now male and female, they are working in the second shift also. Even odd hours also they are working. So the role of HR is to take care. Otherwise, you can imagine that what will happen to the organization. So for HR, this is also one of the important, the challenge that we need to understand, because as I told you that we have
the gender equity in the organizations also, and we cannot restrict somebody. We have to promote, and when you promote, you have to take care of all the problems that are happening in the organization. But these are the challenges that you are going to face in time to come, and you have to see to it. हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम HR में काम करें, और HR में लोगों को साथ में रखने का काम, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का काम, साथ में उसका डेवलपमेंट होना, वो दैट इज ऑल्सो ए जॉब ऑफ HR डिपार्टमेंट. So now don't think that the role of HR is to look after only one or two area. No, all areas are areas of HR only. And you have to think, you have to work, and you have to develop. Secondly, that most of the youth, they want to make their career in the HR department because the promotions are good, salaries are good, increments are good, and overall facilities are also good. So recently, sir, one of my students, when he did his MSW, he was watchman, and as head of the department I supported him, and in the evening he used to go for his watchman job, and he was studying the MSW. He completed his MSW, and now he is in the the Savic Plastic Limited, and he was telling me that, sir, my salary is 60 lakhs per annum. 60 lakh rupees per annum, जो मेरी 5 साल का आज भी 5 साल का पगार उसको 1 साल में मिलता है. तो यू कैन इमेजिन कि पर्क्स कितना मिलता है. तो आई आस्क हिम पर्क्स, इसी तरह वो तो मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कितना पर्क्स लेना है. पब्लिक रिलेशन के लिए ये वो, सैलरी हैज गॉन अप्स एंड. सो फ्रेंड्स, you have a very bright career, whether MSW or MSW HR. Very bright career. Spend more time in the library. Equip yourself. You have wonderful teachers. Ask to them, deliberate, discuss, dialogue with them, and see to it that you utilize them maximum. If you do so, you will also reach to the optimum level. The choice is yours what you want to do. Choice is yours कि आपको क्या करना है. आपको हिस्ट्री बनाना है या तो फिर जो चलता है वही चलाना है. तो आपको ये तय करना है, and you will have to work hard. For girls, yes, we have heard a lot about the history. Now we need to prepare her story also. We should have maximum her stories now. Let us not talk only about history. Why history? There is a her story also, and we need to change it. And let us make more and more her stories also. And we should talk about you people also, that here is a student from so and so batch who has reached to this level. But there is a vast opportunity, and you have to prepare yourself, work hard. Wish you all the best. Thank you.